So the next thing we're gonna be covering is IoT, and it's pretty simple. ये भी I'm pretty sure आएगा. इसके लिए you're gonna need a wireless device. It's in the same row as ये routers जहाँ से नहीं हम उठाते. Network devices नीचे row में wireless devices में you go there and you pick up APPT access point PT. इसके साथ एक access point PTA है, access point PTAC है. ये दोनों नहीं चाहिए. we're gonna need the basic PT1. ठीक है. And इसके साथ we're gonna be using a switch, and we're also gonna be needing a server to set up Internet of Things. ठीक है. And just a PC just for good measure. good. अच्छा तो just connect everything up. Control the walk so you don't have to do it over and over again. End devices में you're gonna see a house. Over here you have all of these different devices which you can add. Because I'm just gonna add an AC and a door, and the way this works is कि आपके access point पे ना there's a thing called an SSID, and this is what you use to connect to wireless devices. आपकी यहाँ पे default होती है. You can change it to anything. I'm gonna change it to shawarma. ठीक है. And you go to the air conditioner, you go to any like appliance that you have, you go to wireless, and यहाँ पे भी you're gonna see an option of an SSID. Make sure it's the same one जो आपने अभी पहले अपने access point पे click किया. If it's the same one, यहाँ पे connection हो जाएगा कुछ seconds बाद. Let's go over here, go to config wireless, इधर जाके change it to shawarma. अभी कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा. shawarma ठीक है. एंड AC पे भी shawarma. अच्छा, if it's matching तो ये कनेक्शन शो हो जाते हैं, which means के this is successfully connected. अब to set up IoT you're gonna have to go to the server. You're gonna have to give it a network. You're gonna have to give it an IP address 192.168.1.1. 1.2. 1.1 is gonna be the gateway भी दे दो, because if in a bit we're gonna use it. Go to services, go to DHCP, ठीक है, and just change the starting IP address to 2 to 3 actually, क्योंकि 1 और 2 हमने गेटवे और सर्वर को दे दिया ना. एंड टर्न इट ऑन. ठीक है. नाउ यू हैव अ DHCP pool configured, और just go to the third last option, IoT जो है, turn this on as well. ठीक है. Now अब the next thing we're gonna have to do is we're gonna have to make an IoT account. उसके लिए we're gonna have to go to desktop. नीचे you're gonna see an option of an IoT monitor. Go over there and open it. This is gonna take a while, लेकिन what we're gonna be doing is we're gonna be making an IoT monitor account, which is gonna help us remotely access our appliances जो है ना यहाँ पे. तो जो इसके लिए we're gonna have to give it the IoT server address, जिस पे ये जो server नहीं है जिस पे हमने अभी एड्रेस दिया है, जिस पे हम IoT बना रहे हैं, इसका एड्रेस देना होगा. And we're gonna have to click login now. It's gonna say wrong username and password because we have not created an account yet. Just click on sign up now, जो blue option है. Just give it a username and a password. ठीक है. Nebras. तो click create, and now your account is done. Just to make sure कि you have it done, आप services में वापस जाके you're gonna go back to IoT, you're gonna click it, you're gonna refresh it, and you're gonna see कि यहाँ पे आपका username and password आ गया, which means कि yup, your account has been made. Now you can go to the devices and you're gonna be able to connect to the server. ठीक है. तो go to settings and you're gonna click on remote server. यहाँ पे जो server का address है and the username and password,
and you're gonna click connect, and if it connects, यहाँ पे connection की जगह refresh आ गया, which means कि successfully connect हो गया. And now if you go back to the server, you're gonna see कि यहाँ पे एक device आ गया, and this device is the AC. यहाँ पे AC लिखा है, and you can turn it on and off. अगर मैं यहाँ पे zoom in करूँ, ठीक है, AC को full बड़ा कर लेते हैं, ठीक है. And now if I go to the server, ठीक है, and I turn this, ठीक है, you see this red dot, it means it's off. It's on, which means it's on. इस तरह करके you can remotely control your devices ना, ठीक है. And this is the portion we covered in our lab. लेकिन sir जो है ना, he doesn't like to give stuff we covered. He likes to add stuff to it. So what I'm gonna be doing now is I'm just gonna add another level to this, ठीक है. ये हमने lab में नहीं किया हुआ. I'm gonna try to access this IoT from another network, ठीक है. ये तो एक ही network है ना, so it's pretty easy. This is probably not gonna be in our Viva. यहाँ तक के इस level का नहीं होगा. तो for that I'm just gonna make another network, ठीक है. 2 PCs, simple a switch and a router. I'm just gonna try to access this IoT जो हमने यहाँ पे किया बनाया from another network, ठीक है. and I'm guessing कि इसी तरह का कुछ आएगा in tomorrow's lab final. If you can do this, you can pretty much do anything in regards to IoTs. So if you are able to do this, chill हो जाओ. 2.2 इस network को 2.1 gateway, ठीक है. Same thing over here. Stop IP config 2.3 2.1 gateway. Let's go to the router, turn it on. यहाँ पे gateway देना and just connect it to the second switch जहाँ पे हमने IoT configure किए हैं. It's on 1/0. यहाँ पे हमने इस वाले का देना है, which was 1.1 जो gateway था, ठीक है. Turn it on and now let's just see के अच्छा से पहले हमने PC को नहीं IP3 में go ahead and switch it to the DHCP और इसका चल जाना चाहिए. I can go over here. Default gateway नहीं है. That's a problem. IP config default gateway यहाँ पे है. Why is this happening? ये नहीं होना चाहिए. रुको, it might be because of the DHCP में जो मैंने condition दी थी. Just click save और यहाँ पे जाके static DHCP gateway नहीं आ रहा यहाँ पे. That's a problem. क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे gateway देना है. 1.1 save and now it should be working. gateway भी आ गया. yep. अच्छा, अब gateway भी आ गया है तो now if we ping this PC, hopefully it should work. Successful, ठीक है. which means let me just ping the server to double check के server access हो रहा है, ठीक है. and IoT में जाते हैं. let's look at the devices. make sure they're online क्योंकि इन devices के साथ ये काफ़ी होता है कि you do nothing and after a while they just disconnect on their own. give it username, password Nebras and Nebras. sign in
हाँ इसी एक चीज़ डिस्कनेक्ट होगी ना, डोर डिस्कनेक्टेड। नहीं अच्छा मैंने ऐड ही नहीं की थी। 192.168.1.2 Nebras connect. It's not working. Now it's working. ठीक है, DHCP से switch things around. कभी इनमें मसला होता है। मैंने static से DHCP रिफ़्रेश किया था, तो उसके बाद कनेक्ट किया तो it worked. अब मैं सर्वर पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे दोनों चीज़ें आ रही हैं ना। तो if I want to access this remotely from this PC, ठीक है, which is in a separate network, उसके लिए I'm gonna have to go to desktop ना, इधर भी you have this IoT monitor app, यहाँ पे जाते हो। once you open it you can give it the same username and password जो आपने सर्वर के ऊपर अकाउंट पे बनाया, and you should be able to control it from this PC, ठीक है। and if that works then you're pretty much done with IoT. It's gonna be enough for tomorrow's final. Just give it the address of the server जिस पे आपने ये configure किया है. Give it the username and password. Nebras log in and you should be able to see the devices. Yep, ये हो रहा है, काम कर रहा है. Zoom in, let me zoom in on the door. किधर चला गया दरवाज़ा? ये रहा. ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे दरवाज़ा है ना, तो इफ़ आई गो टू द डोर फ्रॉम PC2, ठीक है, आई कैन लॉक इट. यू सी रेड हो गया. आई कैन अनलॉक इट एज वेल, ठीक है, विच मीन्स कि एज लॉन्ग एज यू नो द यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड यू कैन पिंग दिस सर्वर, ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट. आपने इफ़ यू कैन पिंग द सर्वर, ठीक है, you can access the IoT from anywhere within the network, ठीक है. अब it wouldn't matter कि network कितना बड़ा है, it could be like 2 campuses दूर आप कंप्यूटर में बैठे हुए, and as long as you can ping this server जिस पे आपने IoT configure किया हुआ है, you should be able to remotely access this door and this AC, which is the whole point कि आप ना अपनी appliances को और अपने devices को wirelessly control कर सको. That's it for IoT. जैसे कोई रिकैप, आपने अगर कनेक्ट करना है ना, कनेक्टिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने SSID यूज़ करनी है, ठीक है. लेकिन इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर डिवाइसेस, उसके लिए यू हैव टू सेट अप एन IoT अकाउंट ऑन योर सर्वर, ठीक है. गो टू सर्विसेज, यू DHCP पूल ऑन करना पड़ता है, गेटवे देना ज़रूरी है, वरना आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है. गेटवे देने के बाद you can go to IoT, you can turn this on, ठीक है. you can you have to go to desktop, यहाँ पे you have to make an account जिसका था IP देके, and after that you can just go to the appliances. यहाँ पे you're gonna have to give the server address and the username and password. Click on refresh, connect, and it should connect. और अगर नहीं हो रहा, you can just try switching this around, static and DHCP a bunch of times. wireless पे जाके you can also do that from here, ठीक है. static DHCP, just do that a few times, and once you see के यहाँ पे you're getting a DHCP IP, that means कि आपका server काम कर रहा है, and it should not have any problems then, and it should just connect directly. So that's how you do IoT.